Good morning, dear students. According to electrochemistry chapter, we know there are two types of cells: electrochemical cell and the another one is electrolytic cell. In electrochemical cell, we know that chemical energy convert into electrical energy, while in electrolytic cell, electrical energy convert into chemical energy. Right now we are studying first part, which is electrochemical cell, and there are so many examples of electrochemical cells also that we have discussed. Number one, that is Daniell cell. According to Daniell cell, we have discussed Nernst equation, Gibbs free energy in last lecture. But now again we will start electrochemical cells, example number 2, which is dry cell. मैं टेक्स्ट बुक्स की सीक्वेंस तो थोड़ा ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि पीछे का सेक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल का है, तो मैं एक साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आगे बढ़ाएंगे. सो नाउ वी विल टीच एन इम्पोर्टेंट एग्जांपल about electrochemical cell, which is dry cell. But before learning dry cell, remind important point that there are two types of cell. Number one, it is primary cell, and number two, it is secondary cell. Which type of cells are known as primary cells? Just see. After discharging, we cannot recharge. We cannot recharge the cells which are known as primary cells. Can't recharge. These are the primary cells. And if we recharge the cells, then these are the secondary cell. If we have a mobile battery, we know that we can recharge the mobile battery. So these are the secondary cells. But if dry cell, which is used in a wall clock, we cannot recharge this dry cell. After discharging, we cannot reuse this type of cells. So can't reuse, then these are the primary cells. Right now, primary cells, right now pencil cells are available which are possible to recharge, but these cells are prepared from nickel cadmium cell. But this is not nickel cadmium cell, we are discussing about dry cell. So focus on the board. There are two types of cell. Number one, which is primary cell, so we cannot recharge, can't recharge. This is primary cell. And recharge is possible. This is secondary cell. The example of primary cell is dry cell, and the example of secondary cell is lead storage cell. So these are the various type of examples of primary and secondary cell. But before this, we will understand dry cell first. Just see, this is the figure of dry cell. We know and we have seen the dry cell in our wall clock. This type of pencil cell is available. This is dry cell. But what is in dry cell? First of all, what is the principle of dry cell? We know that chemical energy convert into electrical energy. This is the principle of dry cell. Now, the construction of dry cell is here. Just see, in dry cell, the end of this dry cell is prepared from zinc. Okay, यहाँ पर जो नीचे होता है ना वो zinc होता है. The end, the cylinder, in this cylinder, the end of the cylinder is prepared from zinc. Okay, तो zinc का यहाँ पर रह गया है end. Just see. Now we will add graphite rod in the middle of the cylinder. This is the graphite rod. We are adding this graphite rod in the middle of the cylinder. So बीच में है वो graphite का rod है, बराबर यहाँ पर middle पे. So we will add graphite rod in the center of the cylinder. Then manganese oxide and the mixture of carbon. We will add this both, MnO2 plus carbon, and बाकी जिसका भाग यहाँ पर जो बचता है उसमें NH4Cl और ZnCl2 की पेस्ट यहाँ पर यूजफुल है. So in remaining part we will add NH4Cl and ZnCl2. And just for important point, जो ये ग्रेफाइट का रोड है ना, देखिए उसका जो ऊपर का पार्ट है हमने थोड़ा बाहर रखा हुआ है और इससे वैक्स से सील किया जा रहा है. देख रहे हैं यहाँ पर ये वैक्स है. So we will seal this
with the help of wax, इसको ग्रेफाइट रॉड को. So this is the construction of dry cell. Just see again, we repeat the important points. In the cylinder we have used zinc as an anode, but at the end of the cylinder we will add zinc. Okay, in the center of the cylinder we will use the graphite rod which is act as a cathode. Surrounding in the graphite rod we will add MnO2 and the carbon, the mixture of manganese dioxide and carbon will add surrounding the graphite rod, and remaining part which is filled by NH4Cl and ZnCl to ammonium chloride and zinc chloride add as a paste and remaining part of the cylinder, and we will seal with wax to this graphite rod, but उसका थोड़ा पार्ट हमें बाहर रखना है. ठीक है, तो ये हमारे सामने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ. Now we will learn work function of this dry cell. Okay, just see. We know that zinc act as an anode. So if zinc act as an anode, then oxidation process will take place by zinc. Zinc Zn2 plus 2 electron. This is oxidation process. Now reduction process. देखिए यहाँ पर रिडक्शन किसका होगा, थोड़ा हम फिगर पर ध्यान में देंगे. यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस किसका होने वाला है. देखिए रिडक्शन होगा ग्रेफाइट का, बट ग्रेफाइट तो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इसीलिए इनर्ट इलेक्ट्रोड का प्रोसेस तो हो नहीं सकता. तो वो किसके सराउंडिंग में खड़ा हुआ है यहाँ पर, तो ग्रेफाइट के सराउंडिंग में MnO2 है. तो MnO2 रिडक्शन प्रोसेस में टेक्स पार्ट करेगा, तो इसका हम कर रहे हैं टिक, ये आएगा. कार्बन नहीं आएगा बिकॉज वो तो इनर्ट है. उसके बाद स्टूडेंट याद रखिए NH4Cl में NH4 पॉजिटिव आयन है और Cl नेगेटिव आयन. मैं यहाँ पर ये बात रखना चाहूँगा कि ऑलवेज पॉजिटिव आयन है ना उसका रिडक्शन होता है और नेगेटिव आयन है उसका ऑक्सीडेशन होता है. तो NH4 प्लस भी इसमें टेक्स पार्ट्स करेगा क्योंकि NH4 प्लस पॉजिटिव आयन है और हम रिडक्शन की प्रोसेस समझ रहे हैं. बट क्लोरीन यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं होगा बिकॉज इट इज नेगेटिव आयन. जिंक का तो हमने ऑक्सीडेशन में यूज कर ही लिया है, क्लोरीन अभी नेगेटिव है वो भी यूज नहीं करेगा. तो जो रिडक्शन की प्रोसेस है इसमें कौन से आयन यहाँ पर पार्टिसिपेट होंगे, तो MnO2 होगा और NH4 प्लस रहेगा. तो MnO2 हमने यहाँ पर रख दिया, प्लस यहाँ पर हम रखते हैं भी देखिए NH4 प्लस. यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे. यहाँ पर बनता है Mn2O3 प्लस NH3 प्लस H2O. स्टूडेंट मैं रिएक्शन बैलेंस करने जा रहा हूँ. देखिए आप सब मैं कैसे बैलेंस करता हूँ. रेडॉक्स रिएक्शन ऐसा कहता है कि लेफ्ट साइड में जो भी चार्ज रहता है राइट साइड में वही चार्ज रहना चाहिए. तो राइट साइड का चार्ज यहाँ पर 0 है पूरे के पूरा, अगर हम ध्यान में रख ले तो लेफ्ट साइड का यहाँ पर -2 यहाँ पर है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 1 जा 2 प्लस 2 हो गया और ये -2 हो गया. 2 - 2 मीन्स 0 हो गया. तो लेफ्ट में भी 0 राइट में भी 0, तो ये चार्ज बैलेंस हो गया. अभी हम एटम बैलेंस करते हैं. Mn होता है यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 2 कर देंगे. नाइट्रोजन होता है 2, यहाँ पर 2 कर देते हैं. ठीक है, अभी देखते हैं ऑक्सीजन का क्या हुआ. 2 2 जा 4 तो 3 + 1 4. देखते हैं हाइड्रोजन का क्या हुआ. 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 + 2 8. तो इक्वेशन यहाँ पर बैलेंस हो चुका है. सो दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन, बट दिस इज डिस्चार्जिंग रिएक्शन. कौन सा रिएक्शन है ये, डिस्चार्जिंग रिएक्शन है. जब ये सेल खत्म होता है तब ये प्रोसेस शुरू होती है, बट इससे हमें 1.5 वोल्ट का ओनली पोटेंशियल मिलता है. ये जो सेल है वो लेक्लेंशे नाम का साइंटिस्ट है, उसने फाइंड किया हुआ है. सो दिस सेल इज नोन एज लेक्लेंशे सेल. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल इक्वेशन. दिस इज प्राइमरी सेल. This is primary cell, so we cannot recharge this cell. So this is primary cell. Okay. Now, what is the reason behind this that we cannot recharge this primary cell? Just see. जो भी रिचार्ज होता है ना उसमें क्या होता है पता है आपको, रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में होता है और प्रोडक्ट का कन्वर्जन अगर रिएक्टेंट में हो सकता है तो उसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, ऐसा मालूम हो सकता है. तो यहाँ पर देखिए मैंगनीज का अगर ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड करते हैं ना तो यहाँ पर +4 रहता है और यहाँ पर हम मैंगनीज का ऑक्सीडेशन फाइंड करते हैं नंबर तो +3 रहता है. तो मैं यहाँ पर ऐसा बोलूंगा कि Mn4 में से Mn3 यहाँ पर हो रहा है. देखिए
Mn4 में से Mn3 हो रहा है, बट Mn3 में से Mn4 नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको हम रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि रिचार्ज करने के लिए प्रोडक्ट का कन्वर्जन भी रिएक्टर में होना चाहिए ना। सो द पोटेंशियल ऑफ दिस सेल इज 1.5 वोल्ट। Lagrange is the name of scientist who discovered this cell. So this is Lagrange cell. This cell is primary cell. What is the reason behind this? So reduction of Mn plus 4 to Mn3 plus is possible, but Mn3 का Mn4 में कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए उसका रिचार्ज पॉसिबल नहीं है। इसको कहते हैं ड्राई सेल, बट ड्राई नहीं है, वेट सेल है। कहते हैं ड्राई पर है नहीं। ऐसा भी आश्चर्य हो रहा है कि जो है वो नहीं, जो नहीं है वो है। इसको कहते हैं ड्राई पर वो नहीं है, क्योंकि इसमें जो पेस्ट है NH4Cl और ZnCl, क्योंकि वो वेट है। और ड्राई होता है ना, उसमें कोई कभी भी करंट का फ्लो आता ही नहीं है, इसीलिए ड्राई तो कोई बात हो ही नहीं सकती। और इसका जो यूज है वो वॉल क्लॉक है, वॉच यूज हो रहा है, उसका जो होता है टेप रिकॉर्डर में यूज हो रहा है, यहाँ पर इसका बैटरी में यूज कर पा रहे हैं हम। So these are the used of the pencil cell. So this is the important parameters that we are discussing here, that is dry cell, pencil cell, or in 1867 the name of scientist Lagrange who discovered this cell. So this cell is known as a Lagrange cell. Is it clear? So now this is the important points of dry cell. Again we will repeat the dry cell according to our board work. Just see, in this cylinder zinc is act as an anode, which is the end of the cylinder. In the center of the cylinder we are using graphite cathode. Graphite is a cathode. Okay, in surrounding graphite we are using MnO2 plus carbon, and the remaining part is filled by NH4Cl and ZnCl to paste. So this is the construction. What is the work function? Zinc acts as an anode, so oxidation process will takes place by zinc. So zinc 2 plus 2 electron reduction. Graphite will use as a reduction, but graphite is an inert electrode, so we cannot use graphite, but the surface of graphite is active. On the surface it is surrounded by MnO2 plus carbon, so MnO2 you will use in reduction, carbon will not use. पॉजिटिव आयन का रिडक्शन होता है तो NH4 प्लस यूज्ड होता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। Cl का नहीं होता, जिंक का नहीं होता, Cl का नहीं होता, तो MnO2 और NH4 प्लस यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस में आ गए हैं। उसकी रिडक्शन प्रोसेस हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। इसका पोटेंशियल 1.5 वोल्ट है। लैग्रेंज नाम के साइंटिस्ट ने फाइंड किया, सो इट इज लैग्रेंज बिकॉज़ इट इज प्राइमरी सेल। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि Mn4 में Mn3 हो रहा है, पर Mn3 का Mn4 में यहाँ प्रोसेस नहीं हो पा रही है, सो वी कैन नॉट रिचार्ज दिस सेल। ये ड्राई सेल कहा जाता है, पर ये ड्राई नहीं है बिकॉज इसमें वेट पेस्ट अंदर डाली हुई है। द यूज वॉल क्लॉक में, बैटरी में, टैप रिकॉर्डर में उसका यूज, इसका इस्तेमाल हम कर पा रहे हैं। सो दिस इज द ड्राई सेल एंड वी नो दैट this is the primary cell. So these are the two types of cells, primary cells and secondary cells. Is it clear to all? Again आपको ये दूसरी तीसरी बार देखना है तो आप उसका वीडियो रिवाइज करके देख सकते हैं। थ्योरेटिकल पॉइंट है, बोर्ड वर्क की इमेज में भेज दूंगा और आपको जो क्वेश्चन है उसकी इमेज में मिल जाएगी। तो आज आपको 3-4 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। प्राइमरी सेकेंडरी सेल नए क्वेश्चन है, वो शॉर्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर ड्राई सेल का आपको बड़ा क्वेश्चन प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, इसका होमवर्क भी रिवील करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।